So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with a new chapter, that is self-defense. Everyone, including girls, must learn the techniques of self-defense to counter incidents of any misbehavior or crime. Self-defense can be of two types, moral and physical self-defense. तो सबको, नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज शुड ऑल्सो लर्न द टेक्निक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, ताकि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है इन फ्यूचर एंड दे आर ऑन देयर ओन, सो वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें. सेल्फ डिफेंस टू टाइप्स का होता है. एक होता है मॉरल सेल्फ डिफेंस, दूसरा होता है फिजिकल सेल्फ डिफेंस. मॉरल इज़ लाइक अ साइकोलॉजिकली एंड फिजिकल इज़ फिजिकली. Moral self-defense. As is the old saying, prevention is better than cure. One must guard against undesirable incidents. So जैसे कि पुरानी कहावत है कि prevention is better than cure, तो हमें हमेशा अपनी बुरी आदतों को ध्यान में रखना है, या अपनी आदतों को और जिस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं सोसाइटी में, वो हमें हमेशा ध्यान रखना है. In doing so, not only do we help ourselves or others, but can also help in making our society a better place to live. और जब हम अपनी आदतों को सुधार में रखते हैं, अपनी सोसाइटी के हिसाब से रखते हैं, तो हम सिर्फ अपनी ही हेल्प नहीं करते, दूसरों की नहीं करते, बल्कि एज अ सोसाइटी हम सबकी हेल्प कर पाते हैं. As NCC cadets, with a built-in sense of responsibility, it is necessary that prevention of untoward incidents is ensured by all boys and girls cadets. और as we all are NCC cadets, so we should ensure that हमारी एक बिल्ड इन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम ये अवेयर करें या ये इंश्योर करें कि हमारी सोसाइटी में किसी भी लड़की के साथ, नॉट ओनली गर्ल, किसी भी लड़के के साथ किसी तरह का मिसबिहेवियर ना हो, एंड everyone is feeling protected and secured in our society. Some of the untoward incidents that one can sometimes come across are, कुछ ऐसे incidents, moral incidents, जो कि किसी को morally या psychologically affect कर सकते हैं. वो होते हैं road accidents, pickpocketing, hooliganism, theft and robbery, molestation, eve teasing and sexual harassment, smoking, drugs and alcoholism. So we will discuss these topics one by one. The above incidents can be avoided if every person of society knows his or her responsibility towards society and measures to prevent these untoward incidents. So ये सारे जो incidents हैं, ये हमारी सोसाइटी में तब होते हैं जब किसी इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं पता है. ओके, द थिंग इज़, आपने पढ़ा होगा, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कि कोई भी बिज़नेस या कंपनी जब ऑपरेट करती है सोसाइटी में, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को कुछ वापस करे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है, दो इट इज़ अ लीगल पर्सन. जब आप लोग अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप सोसाइटी से अपने रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारी सोसाइटी को अच्छे तरीके से मेंटेन और डिग्निफाई करें. So it is responsibility of every person who is living in this society. Road accidents. To avoid road accidents, one should walk carefully on the roads and streets. You have to walk carefully on the roads and streets. Follow all road safety rules and traffic signals, and begin early to reach in time and never overspeed. This is a very common thing which all have to follow, कि हमेशा टाइम से पहले ही निकलना पड़ता है ताकि बाद में ओवर स्पीडिंग ना हो. नेवर मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग. ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस में नहीं आना है. ऑलवेज क्रॉस रोड्स थ्रू जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवरब्रिज और सबवे. जो रोड क्रॉस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप उन्हें अच्छे से क्रॉस करो. ऑल चिल्ड्रन शुड बी टॉट द रोड सेफ्टी रूल्स, एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल द रोड सेफ्टी सिग्नल्स और रूल्स. रोड सेफ्टी सिग्नल्स और जो मेन हमारे सिग्नल्स होते हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यू हैव टू जस्ट ब्रॉडली इंश्योर इन दिस वाला पैराग्राफ कि आपको ये सारे जो मेजर्स हैं इनको इंश्योर करना है. पिक पॉकेटिंग, होलोगैनिज्म, थेफ्ट एंड रॉबरी. One should avoid traveling in crowded places and should try to carry little cash and valuables to prevent pickpocketing. So you have to avoid traveling in very crowded places, क्योंकि crowded places में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे ना चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पिक पॉकेटिंग के. ठीक है, और जितना हो सके उतना कम अपने साथ कैश लेकर चलना चाहिए. और अब तो वैसे भी ऑनलाइन वाला ज़माना है, सो कैश सबके पास मिनिमम ही रहता है. One should never indulge in hooliganism, and if hooligans are seen indulging in such activities, should try for a peaceful dispersion. आपको hooliganism activity में involve नहीं होता है. Now what is hooliganism? I have written the meaning here. Hooliganism is a violent or rowdy behavior by young troublemakers in a gang. जब बहुत young बच्चे, boys
ईदर गर्ल्स, नॉट ओनली अबाउट बॉयज़, गर्ल्स भी होती हैं जो गर्ल्स को टीज़ करती हैं या फिर बॉयज़ को टीज़ करती हैं. तो जब एक यंग ग्रुप ऑफ पीपल किसी को टीज़ करता है वॉलेंटली, राउडी, या फिर किसी को सेक्शुअलाइज करता है किसी तरह से, उसे हम होलोगैनिज्म बोलते हैं. ठीक है. सो यू हैव टू अवॉइड दैट. और अगर आप कहीं देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, सो आपको वहाँ पर पीस सेटल करना है. ठीक है. The next is, if the incidents cannot be controlled, one should report the same to nearest police station. और अगर आपको लगता है कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, then you have to report the incident to the police station. One must ensure prevention of robbery and theft and report any such incidents to police if it happens. It is the same point. Now, eve teasing. What is eve teasing? Eve teasing is unwanted sexual remarks or advances by a man to women in public places. So eve teasing is specifically related to men. When men sexualize women in public places, that is known as eve teasing. Molestation and sexual harassment. Boys must understand that eve teasing, molestation and sexual harassment are criminal offences. You have to understand, not only boys, girls also have to understand that these things are a criminal offence in our law. So you have to avoid them. Girls should not dress in such a way which can attract degrading remarks, glances or action. This is a similar point. इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल और डिस्कशन होता है आजकल, but this is the simple thing that if you are living in a decent society, you have to behave in a decent manner. So this is a thing that you should have to be decent in our society. Other than that, it's your choice. Boys must learn to respect girls' dignity, and girls should avoid traveling in darkness alone. Boys and girls both have to understand that you have to respect each other, and if probable, you all should not travel in darkness alone, dark at night. And working with the opposite sex in a healthy environment must be ensured. You have to ensure that if other sexes are working together, you have to ensure that there is cooperation between them. Okay. Now, smoking, drugs and alcoholism, they must spread positive thinking and awareness amongst the society. You all are young cadets or young people, so you have to spread positive thinking and awareness in the society. They should spend time with their families and should introduce their friends. You have to spend time with your family and friends, and you must understand that drug addiction, smoking and alcoholism are health hazards and social evils. You have to understand कि जितने भी ये हमारे social evils हैं, drug addiction, smoking और alcoholism, these are just like a biggest mistake by anyone who does this. You have to understand this. Either you can take example from your nearest or dearest ones, or you can try it and you can also experience that. It's also your choice. They must understand that laws are implemented severely to penalize those found guilty of selling drugs and encouraging people to take drugs. So you have to ensure कि आप इन चीज़ों में indulge ना हो. अगर आप देख रहे हैं कि कोई इन चीज़ों में indulge हो रहा है, so you have to try your best कि उसको उससे दूर रखें. ठीक है. Because you have to fulfill your responsibility towards the society. अगर आपके सामने कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है और आप उसको ignore करके चल रहे हैं, so you are just neglecting your responsibility. So be aware to your responsibilities. Now, physical self-defense or unarmed combat is a collection of offensive as well as defensive techniques derived from martial arts and combat sports. Physical self-defense or unarmed combat. आर्म्ड कॉम्बैट ये होता है जब हमारे पास आर्म्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, गन्स होती हैं या फिर आर्टिलरीज होती हैं. ठीक है. फिजिकल सेल्फ डिफेंस हमारा वो सेल्फ डिफेंस होता है जिसमें आप अपने सिर्फ फिजिकल फोर्स को लेकर या फिर अपनी बॉडी के दम पर ही किसी दूसरे अपने ओपोनेंट से लड़ते हैं. An unarmed combat is a formidable weapon which in many circumstances is a more effective weapon against an armed enemy. ठीक है. तो अगर बाय चांस आपके आर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, मे बी इन वॉर और ड्यूरिंग एनी फाइट, you have to ensure that you are physically stable to fight anyone. You have to maintain your physical fitness. Now, principles of physical self-defense. A brutal method of attack must be used without any hesitation if you are feeling that your security is being threatened. So you have to choose a brutal method. It's not that you have to respect the सामने वाला who is disrespecting you. You have to choose the method to safeguard your interest. Attack must be aimed and carried out in a fierce, ruthless and determined manner. You have to be confident in your actions. Attack the most vulnerable points of the opponent's body. What are the vulnerable points of the body or the part of a human body? We will understand that in a later chapter. The initial attack must be aimed at disabling or followed quickly by a hold, lock or throw. What is a hold, lock, throw attacks? We will also understand this in the next upcoming video. A defense move followed by a rapid counter attack must be aimed to catch the enemy by surprise.
So you have to do your techniques that your opponent should not primarily know that what you are going to do next. You have to be very careful and you have to be very clever. Surprise, speed, strength, smoothness of execution, gaining and retention of initiative are essential to overpower the enemy. So you must also possess these actions to you must also possess these skills in you to perform a better action towards your opponent. Now, vulnerable parts of the body, we will cover this portion in the next video. I hope you are able to understand it. Thank you so much for watching this video.